वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अरवेज देव। मेरा टॉपिक है 12th क्लास का फॉरगेटफुलनेस, जो जम्मू कश्मीर बोर्ड से जो है सिलेबस है उसका फॉरगेटफुलनेस जो रॉबर्ट लाइन ने लिखा है, इस पे हम बात करेंगे। हम थ्रू टेक्स्ट जाएंगे, इसका उर्दू में तर्जमा करेंगे और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उन पे बात करेंगे। अब क्या कहता है कि a list of articles lost by the railway travelers and now on sale at a Great London station has been published, and many people who read it have been astonished at absent-mindedness of their fellows. If the statistical records were available on the subject, however, I doubt whether it would be found that absent-mindedness is common, and it is efficiency of the human memory that compels my want. Modern man remembers even telephone numbers. He remembers the addresses of his friends. He remembers the date of the good vintages. He remembers the appointment for lunch and dinners. His memory is crowded with the names of actors and actresses, and cricketers and footballers and models, and he can tell you what the weather was like in a long past August, and the name of the provincial hotels at which he had a well meal during the summer. In his ordinary life, again, he remembers almost everything that he is expected to remember. How many men in all London pocket a single item of clothing when dressing in the mornings? Not one in 100, perhaps not one in 1,000. How many of them pocket to shut the uh, front door when leaving the house? Scarcely more. And so it goes on through the day. Almost everybody remembered to do the right things at the right moment till it is time to go to bed, and then ordinary men seldom forget to turn off the light before going upstairs. मुसाफिरों के ज़रिए से कोई ही चीज़ों से हम ये सोच सकते हैं कि आदमी की याददाश्त बहुत ही कमज़ोर है, मगर हकीकत और सच्चाई ये नहीं। आदमी की याददाश्त बहुत ही तेज़ होती है। जदीद ज़माने का आदमी फ्रेंड के टेलीफ़ोन नंबर को भी याद रख सकता है, वो फ्रेंड के एड्रेस को याद रख सकता है, वो शराब की तारीखों को याद रख सकता है, और वो दोपहर रात के खाने की दावत को याद रख सकता है। वो एक्टर और एक्ट्रेसेस के नामों को भी याद रख सकता है। उसे क्रिकेट खेलने वालों, फुटबॉल खेलने वालों, डाकुओं और कातलों के नाम भी याद रहते हैं। वो इस होटल का नाम भी याद रह सकता है जहां उसे बेजायका खाना दिया गया हो। वो अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में उसे जो कुछ भी याद रहना चाहिए वो उसको याद रखता है। कोई भी आदमी सुबह के कपड़े पहने हुए अपने कपड़ों की ज़रूरी चीज़ों को नहीं भूलता है। घर से बाहर जाते हुए कोई भी शख्स सामने का दरवाज़ा बंद करना नहीं भूलता है। कोई भी सोने से पहले रोशनी बुझाना नहीं भूलता। कहने का मतलब ये है कि सारा दिन आदमी ठीक वक़्त पर ठीक काम करता है। करना नहीं भूलता बल्कि करता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट से जो वर्ड्स आए हुए हैं, यहाँ पे एब्सेंट माइंडेडनेस आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जुमलों में, और स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स इसको भी आप कर सकते हैं, और विंटेज। अब जो है एब्सेंट माइंडेडनेस का मतलब होता है भूलना, स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड का मतलब होता है कि एक शुमारी रिकॉर्ड, और विंटेज का मतलब होता है कि शराब, और इनको अपने जुमलों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम दूसरे पैरे पे चलेंगे। अब कहता है कि dear, it must be admitted some matters in regards to which the memory works with less than its usual perfections. It is only a very methodical man, I imagine, who can always remember to take medicine his doctor has prescribed for him. This is the more surprising because medicine should be one of the easiest things to remember. As a rule, it is supposed to be taken before, during, or after meals, and the meal itself should be of reminder.
लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि अ, बड़े लोग जैसे मूसीकारों की याददाश्त बहुत ही हैरानकुन है। शायरों की याददाश्त जिसमें सॉक्रेट और कोलरिज अ याददाश्त से कहीं ज़्यादा होती है, उनकी ज़्यादा होती है और सियासतदानों की याददाश्त बहुत ही कमज़ोर होती है। वो अक्सर एक-दूसरे को गलत तकरीर अ, या गलत इत्तला देते रहते हैं, कसूरवार ठहराते रहते हैं। फिर भी शायरों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है और इनमें से ज़्यादातर अक्ल भी तेज़ होती है। The question whether the possessions of a good memory is altogether desire has often been discussed. Many fallible memories have sometimes tried to make out a case for their superiority. A man who say who is the perfect remembering machine is seldom a man of the first intelligence, and uh, they quote uh, a machine is seldom a man of the first intelligence, as they called a serious case of the children's man who had marvelous memories and yet who had no intellect to speak of. And I imagine, however, that on the whole, the great writers and the great composers of the music have been with the exceptional power of memory, and the poet have known had I have known have had better memories than the stock brokers, and I have known memory endures half the substance of their arts. On the other hand, statesmen seems to have the extraordinary bad memory. Let two statesmen attempt to recall the same events, what happened, for examples, at some cabinet meetings, and each of them will tell you that the other story too inaccurate, that either he had a memory like Sieve or as an audacious purveyor of the truth. The proof can't see with which the fact and the autobiographies and the speech of the statesman are challenged, suggests that the war has not yet begun to produce the ideal statesman, men who, like great poets, have the genius memory and of the intellectual combined. लास्ट पैरा है, इसको पढ़ने के बाद हम जो है वो इसका पूरा जो है वो क्रक्स बयान करेंगे उर्दू में. At the same time, orderly good memory is so common that we regard a man who doesn't possesses it as eccentric. I have heard of a father who have offered to take the baby out in a perambulator, was tempted by the sunny mornings to pause on his journey and slip into a public house for a glass of beer, leaving the perambulator outside. He disappeared through the door of the saloon bar. A little later, his wife had to do some shopping, which took her past the public house, where, to her horror, she discovered her sleeping baby. Indignant at her husband's behavior, she decided to teach him a lesson, and she wheeled away the perambulator, picturing to her uh, self his terror when he would come out and find the baby gone, and she arrived at home, anticipating with angry relish the white face and quivering lips that would soon appear with the news that the baby had been stolen. What was her vexation, however, when just before lunch her husband came in, smiling cheerfully and asking, "Well, my dear, what is for lunch today?" Having forgotten all about the baby,
वो इसलिए कंसिडर किया जाता है कि एब्सेंट माइंडेडनेस एंगलर्स और पोएट का एक वर्टिव है, इसलिए कि उनके जो माइंड है वो फील्ड होते हैं, मतलब जो है वो उन बातों से जो काफी ज्यादा ग्लोरियस हैं. तो he considered the absent-mindedness of the anglers and the poet uh, as a virtue because their minds are filled with the glorious matters. अब यहाँ पे कहता है कि how are the writers and the composers different from the statesmen? writer और writer writer और composer और वो statesman का मतलब होता है कि जो तकरीरें करता है, उससे कैसे मुख्तलिफ होता है. तो राइटर कंपोजर जो है वो स्टेटमैन से इसलिए मुख्तलिफ होता है कि स्टेटमैन जो उसको बैड मेमोरी होती है और उनको अच्छी मेमोरी होती है. तो where he can say that writers and the composers are having the good memories, they can remember the everything, they are more intelligent too, but the statesman have the bad memory and he can't remember even his own personal matter too, according to the text. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है. At times, writer make an humor statement to the ridiculous or the censure. Such a statement is called a scoffism. Given examples of the scoffisms from the given essay. तो कहता है यहाँ पे उसने उनको मजाक करने की कोशिश की हुई है और इसको हम जो है रेडिक्यूल भी कहते हैं इंग्लिश में या सेंसोर भी कहते हैं. तो वो स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को हम स्कॉइज्म्स कहते हैं. तो हमने एग्जांपल्स देनी है कि स्कॉइज्म्स जो है वो टेक्स्ट में कहाँ है. देयर हेड्स आर अमंग द स्टार्स, ये एक स्कॉइज्म्स है. their hearts in their boots as they recall their exploits or their errors, ये इसमें एक स्कॉइज्म्स है. यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन जो है, most of us IPs are born with the prosaically efficient memories. Is the writers appreciative of the kinds of memory most ordinary people have? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, कहता है कि most of us IPs are born with prosaically efficient memories. कहता है कि उनको जो है वो क्या efficient memories होती है. यानी कि दिलचस्पी, प्रोसिक का मतलब होता है दिलचस्पी, गैर दिलचस्पी जो है वो मेमोरी होती है, उसी से वो जो है उन्होंने जन्म लिया होता है. क्या राइटर यहाँ पे अप्रिशिएट करता है इस काइंड की मेमोरी को जो मोस्टली गैर मामूली लोगों में होती है? तो यस, हाँ, the writer is appreciative of this factor. So that is all about it, boys, girls, जो भी इस लेक्चर को देखें तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि आपने कितना एंजॉय किया है, क्योंकि मेरा एक मकसद है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपको कुछ नॉलेज मिल सके, और मैंने ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए बनाई है. तो आप जो है वीडियो को जो है वो देखिए, कमेंट में मुझे लिखिए. उसके बाद कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो मुझे आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं. मैं आपके उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा. तो इससे पहले मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा. आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो. थैंक यू वेरी मच.